अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्गुमेंट डेवलप कीजिए। हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्गुमेंट। योर लॉर्डशिप्स इम्तियाज साहब अगर देखें सिद्दीकी साहब, आई हैव नॉट, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें। आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाहते। फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, ओहो, एक सेकंड, अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन आउटकम्स इन केसेस एंड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग बेंचेस, दैट इज ए कंप्लीट इरोजन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, दुनिया भर में, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। या बैलेट होता है या रेफल। कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी। चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी मैं बिठा दूं। ये चीज़ें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीज़ों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स की बात की जा रही है। आपकी जजमेंट अपनी है। जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है. It seems to me that even now if you go literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judge-made or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal, because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. या सब फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है और नहीं, सुन लीजिए ना, आप तो हर के जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटिशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कोई दलाइल, आप दलाइल देके ख़त्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे आखिर में।
हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, May I हर proceed? जज अपनी राय लिख देगा May I अपनी मर्जी से। आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए। May I proceed on जी प्लीज। Sirf, I'll only make one observation. It is settled law by now that the Parliament has the power to make our judgments ineffective. And this is a precedent jo ki is embedded in our constitution. if they are lawfully empowered, if the parliament is lawfully empowered, not फिर otherwise. आप बहस करने लगे। But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, Sir, may I आप proceed? जज नहीं May I हैं, आप proceed? हर चीज का वैसे जवाब दे रहे May हैं। I proceed? प्लीज डू सो। आपको इसके एक जरा supplemental आप to चलें, what my शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह learned- कीजिए। My learned brother asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled law. Yes. صدیقی صاحب ذرا صدیقی صاحب ایک کوشچن ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ 3 ممبرز اگر بیٹھ کے بینچز بنائیں گے ایز پر دس لا تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کے خلاف ہے، تو کیا ہم 17 ججز بیٹھ کر جب رول بنائیں گے ہم کوئی ایسا رول بنا سکتے ہیں جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو لے کے ایک شخص کے حوالے کر دیں، یا ایسا رول بنائیں جو کانسٹیٹیوشن کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سر کر تو سکتے ہیں آپ نے، اگر ایک بندے کو انلمیٹڈ پاورز ہیں. My lord, نہیں جسٹ ون منٹ میں آئی ریکویسٹ مائی بردرس، ان کو بحث تو کرنے دیجئے، ہم سب سوال بعد میں کر لیں گے، آپ پلیز اپنے حساب سے اپنے آرگو my lord, کیجئے۔ See, Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of یہ law غلط ہے یا یہ law برا ہے یا اچھا ہے. The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If یہ تو آپ نے somebody آرگیو is نہیں not کیا ابھی تک، competent, سر میں یہ تو کہہ رہا ہوں، آپ ہمیں روکیں، آپ کہیں مجھے آرگیومنٹ سن سر میں لیجئے، تو کہہ رہا ہوں کہ کمپیٹنس نہیں ہے پارلیمنٹ، آپ بتائیں نا ہمیں، شک دیں قائرین کی۔ پلیز آرگو ڈائریکٹ اسی پہ آ جائے میرے خیال میں. اسی پہ آ جائے، یہی سوال ہے. دیکھیے میں آپ دیکھیں، آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، وکیل ہیں، یقیناً ہم لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے آپ ذرا سن لیجیے نا 2 منٹ جی، وہ ہم اپنے اگر ہم ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کریں گے الگ الگ رائے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. میرے حساب سے مناسب نہیں ہے کہ ہم سوال کے طور پہ اپنی رائے آپ کو دیں اور پھر کوئی ہم دوسرا جواب دیں. ہم صرف سوال پوچھ رہیں گے آپ سے آخر میں، آپ اپنے دلائل دے دیجیے، ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ہمیں پسند نہیں آئے تو پھر ہم سوال اتنے پسند آئے شاید سوال ہی نہ پوچھیں، نہیں پسند آئے 2-4 سوال پوچھ لیں گے. اب آپ بسم اللہ کیجیے جی. Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power? And let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. جی. Article 176.